Okay, so hello everybody, good morning and welcome back to the EduphoreIAS, the live Hindu class analysis, the live Hindu class. This. So today we will be beginning first as usually with the questions, and of course after that we will be coming back to the Hindus, today's Hindu, and then we will start our discussion. First of all, the first question is: it is India's policy mantra of multilateralism. Three things are there, keywords: policy of multilateralism, multipolarity, and the middle way that part success at the G20 summit. And you need to discuss the same for in 250 words for 15 marker question. Fine. So the three keywords are there. Means your answer should be based on, or you can say your answer should be somewhat revolve around these three things. You need to define all of these three. Fine, with this example as well. Fine. So you can again following the same set of structure, that is intro, body, and conclusion. Fine. So let us start with the intro. So intro में क्या आना चाहिए? You can say that the you can say that the reports of death of multilateralism are greatly exaggerated, and it would seem from the outcomes of G20 summit in India, especially in the form of New Delhi Leaders Declaration. So throughout India's G20 presidency, you can say somewhat, throughout, I mean, somewhat the New Delhi Declaration was, anticipated. इस तरह की anticipation थी कि नहीं आएगी. Fine, we are not that sure, but still the Sherpa team and all the officers or the people involved in this kind of negotiations and all with multilateral, the multiple of countries finally resulted in some compromise and negotiations which manifested itself in the form of Delhi Declaration. Fine. So this proves the point that somewhat the multilateralism is still there and the death of multilateralism has been greatly exaggerated. Fine. So यहाँ से आप इतना बस 4 to 5 lines max आप introduction लिख सकते हो. After that, we need to now build up on the three things, that is the body part, including these three: multilateralism, multipolarity, and the middle way that India followed actually for successful, for the successful conclusion of the G20 summit. So the three things. So in the body part, you can continue, that is to look at this Delhi Declaration more broadly. It is India's policy of mantras of multilateralism, multipolarity, and the middle way that on the day at Bharat Mandapam, or that resulted in the successful conclusion of this Delhi summit or the G20 summit. Fine. So one by one, you can now explain. That is, first is the multilateralism factor. Yesterday we discussed about the Western Bloc, discuss about the G7 nations, we discuss about the Russian-Ukraine conflict. So all of these points should be mentioned under multilateralism. Fine. Apart from this also, what else can be mentioned here is, of course, the NAM, non-aligned movement, that India was a part of it. That India was neither the part of Soviet bloc nor the Western bloc, rather the part of NAM. So this also, somewhat, proves our point or lends a credence to India being middle, has been always following a middle path or the middle way since ancient times. Somewhat you can say the Buddha's Madhmargi, middle path. Fine. Apart from this, the second one that needs to define is the multipolarity. So support for a multipolar world, and here you can say that the other flip side of the success of G20 summit, of course, came from the growing support for a multipolar world. One which India has been a leading vote of, that India has always supported for a world to be multipolar. Fine, where we have multiple of nations exercising their respective powers in their respective domains. Fine. So for example, US tried to build a unipolar world initially, then China has pushed for a bipolar one, and now India, of course, has always sought for a multipolar world. Fine. This is how you can explain this one. Another and also need to quote some example. For example, you can quote the Donald Trump era tenure, the presidency of the Donald Trump from 2017 to 2021, that what we discussed, that US may remain the most powerful country in the world for the foreseeable future,
but it has also given the world a glimpse of what it would mean where it where what would mean were it to decline as a global power in the Donald Trump era. Fine. So this can be quoted. Apart from this, you can also, in the multipolarity sense, you can quote the geographical terms in terms of the third pole that we discussed. The third pole refers to the Hindu Kush and Himalayan region or Upper South Asia. Fine. And of course, again, the best example of the multipolarity will be the now, all from past many months or years have in news the global south. So of course, the global south is a very good example, can be a very good example of course, multipolarity. Fine. So this can also be mentioned that we discussed yesterday. Apart from this, EU and EU, excuse me. So EU, that is European Union, and EU, both of them now members of G20. So of course, both of these things could be mentioned. Fine. So next, we are expecting that the ASEAN going to be the expected that the ASEAN may also join this G20 bloc in future, and then also this also makes G20, or you can say this also lends credence somewhat in the multipolarity. Fine. Apart from that, the third element of this question, that is middle way or the middle path. So of course, finally you can say it is apparent that India's success at the G20 owes itself to its decades old tradition of abjuring alliances and following a middle path, that is neutrality, fine, on global discord. So this has meant making compromises at times, such as the Indian government refusal to criticize or cut off ties with Russia, considering this Ukraine-Russia conflict, or to invite Ukrainian President Volodymyr Zelensky to address the G20, fine. But you can say somewhat, however, all of this, has put India in a better position, be able to strike a balance between the global south and the north, and the east and the west. Fine. And finally, you can conclude in what could be the conclusion. So you can say that it is this bridging role or the middle path that that is the most needed in time of global polarization. And keeping in mind what even Secretary General Antonio Guterres said, during the Delhi summit, that because if we are intended, if we are indeed one family, as the theme of this summit was, fine, one earth, one family, and one future. So because if we are indeed one global family, we today resemble a rather dysfunctional one, fine, somewhat because of the blocking system like Western Bloc, Eastern Bloc, Russia, China, Ukraine, Russia conflict and all. So somewhat this goes against the global being this family, like say global family, that all of the nations, all of the countries are the part of the single one harmonious family. So of course this goes against of family, considering the present time or present scenarios, whatever geopolitics on. Fine. So of course this is how on these lines you can conclude your answer. So this completes the structure of your answer, that is intro, body part. In body part you need to explain all these three things, and in conclusion of course you can conclude with these lines that what we discussed at that. Fine. Now next question is related to the Rashtriya Vigyan Puraskar that we discussed yesterday. So it will have 3 Vigyan Ratna, of course, 25 Vigyan Shri. I said on the lines of Padam Shri, kind of, you can remember this. 25 Vigyan Yuva Shakti Swarup Bhatnagar and 3 Vigyan Team Awards. 3 and 3 दो चीज तो याद ही रखना, and 25 and 25 याद रख सकते हैं. तो ये first statement is of course indeed correct. Second is the winners will be announced every year on May 11, and May 11 is known as the National Science Day. But this is not National Science Day, but National Technology Day. Fine. Fine. It was mentioned National Technology Day. You can cross check once whether it is a National Science and Technology Day or just Technology Day. Fine. So incorrect option as far as based on this is 2 only. Fine. So the correct answer should be option B. Okay. So moving to the today's newspaper quickly. So this is of course the today's Hindu. Start with the front page or the first page. Beginning from this front page, and कल की जो news है, जो most important news है, I hope all of you are aware of this thing, and that is
course this one I am talking about, that the Lok Sabha passes historic women's reservation bill कि अब 33% जो रिजर्वेशन है विधानसभा एंड लोकसभा के इलेक्शंस में वो किसकी होगी, विमेन की, ठीक है। तो दिस इज समथिंग ऑफ कोर्स इज हिस्टोरिकल इन द सेंस, बट इसमें कुछ कॉलिंग कुछ कैचेस हैं, कुछ कैच है जो हमने कल देखा भी था कि सम वर्ड कहीं ना कहीं ये जो लिमिट इम्प्लीमेंटेशन है इसकी अभी भी लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा से भी पास हो जाएगी ये बिल हो, आई मीन मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है, बट फिर भी ये आज भी अगर ये इस सेशन में आज 21 है, कल 22, 2 दिन और ये सेशन चलने वाला है, तो भी ये नेक्स्ट जो 24 की इलेक्शन है लोकसभा के उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नहीं एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने साथ में ये भी कहा है कि सेंसस एंड डिलिमिटेशन वर्क आफ्टर लोकसभा पोल, एंड इससे पहले कल हमने देखा था कि ये कहा था कि जो ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस 33% रिजर्वेशन है ये कब से होगी, ये होगी आपके वन सेंसस की फाइनली डेटा आ जाए और साथ में डिलिमिटेशन जो कि 2026 में प्रोपोज्ड है, अभी तक फ्रीज किया गया है पॉपुलेशन को 26, तो उस टाइम पे डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी फॉर द लोकसभा एंड एज वेल एज फॉर द विधानसभा, ठीक है। तो उसके बेस पे जो भी न्यू पॉपुलेशन एक डायनेमिक्स बन के आता है उसके बेस पे रिजर्वेशन, ठीक है। सो यू कैन से कि जो फायदा होने वाला है विमेन रिजर्वेशन का वो कहीं ना कहीं हमें 2029 की जो जनरल इलेक्शंस होगी उसमें हमें देखने को मिलता है, मिल सकता है, हमें मिलेगा, ना कि 2024 वाले, ठीक है। सो ये यहाँ पे कैच है, ध्यान रखना। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात कर ली थी कि 128th अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, और ये पास जब हो जाएगा, जब एक्ट बनेगा तो ऑफकोर्स 106th होपफुली होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसा कुछ ही डिविएशन रहता है इसमें, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपने पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि बिल था या एक्ट था और कौन सा था, ठीक है। चलिए कीप अ टैप ऑन दिस, डिटेल में हम इसको फाइनली डिस्कस करेंगे जब ये राज्यसभा से भी पास हो जाए, होपफुली कि आज हो जाना चाहिए, देखते हैं, टाइम है। चलो, तो व्हाट एल्स इम्पोर्टेंट, ओके, this page only. India, issues a tit for tat travel advisory for Canada. So Canada and इंडिया के बीच में जो चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से, फाइन, उसके तो कल की जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि दोनों इंडिया एंड कनाडा ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है अपने अपने सिटीजन्स को के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो क्या चल, ओके। Next from city page, that is this, yes, so city page and दिल्ली से खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हो क्लास तो ऑफ कोर्स आपको गो थ्रू करना चाहिए, पर एटलीस्ट हैव अ कर्सरी लुक कि आपके आसपास क्या चल रहा है। एंड अगेन स्टेट्स पेज, सो स्टेट्स पे मोस्टली हमने पॉलिटिक्स ही देखी है, पॉलिटिक्स ही देखने को मिलती है इस पे, ठीक है, टाइम एंड पॉलिटिक्स स्टेट्स पेज। So sustained ties with Canada likely to hit hospitality sector. कैसे? So Indo-Canadian relations have hit a new low with both countries issuing advisories urging citizens to be cautious while traveling to regions. Canada is one of the top 10 countries to contribute to foreign tourist arrivals in Kerala. Especially केरला में अगर देख सकते हैं कैनेडियन टूरिस्ट विजिटिंग केरला, एक डेटा है हमारे पास 2019 में, देख सकते हो 27,000 के रेंज में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे में फर्दर ये फिगर कम हो सकती है, ओके। ऑल ऑफ दीज एड्स ऑन फाइनली स्टेट्स पेज। सो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू रिकंसिडर कावेरी। सो कर्नाटका ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट से कि जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, it should reconsider Kaveri water release order that was given on September 18 to decision to ensure a flow of 5,000 cusecs of river water to Tamil Nadu till September 29. This was said by Kaveri Water Management Authority on the after the judgment of Supreme Court. Supreme Court ने भी
डायरेक्शन दिया था कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि इतना जो पानी है वो रिलीज किया जाए फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चल रहा है मुद्दा काफी टाइम से और ये भी चलता ही रहेगा जब खास क्रोड निकल के नहीं आता। ICMR not to conduct true net test to detect Nipah virus। क्या सो ट्रू नेट टेस्ट जो ICMR ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है फॉर डिटेक्टिंग दिस निपा वायरस। क्या सो इसको रखना ओके। ओके, सो एक स्टडी की गई है कि एंड दिस स्टडी समवॉट थ्रोज लाइट ऑन हाउ ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटीज अफेक्ट एवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज स्टार्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये एक स्टडी की गई है, कहाँ पे हुई स्टडी? दिस वाज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, and this could help us in understanding how gravitation is connected to galaxy evolution। ठीक है, one of the जो scholars हैं आदित्य, post doctoral fellow at the IIA, so he has tried to explore this all and this will go a long way that how gravitational services are connected with star formation, gas fraction, time scale for growth of gravitational instabilities and finally observe the morphology as well। fine, so somewhat इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन से कि समवॉट स्पॉन्सर कर रही है इस चीज़ को, स्टडी को। ये आप यहाँ पे मेरी जो डिपार्टमेंट है इसकी स्टेटमेंट भी देख सकते। ओके, फाइनली वी हैव लर्नड दिस एडिटोरियल पेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ एनी न्यूज़पेपर। सो दिस इज अबाउट टेकिंग अ जायंट लीप फॉर न्यू एथिक्स स्पेस। बड़े ही अच्छे तरीके से इसको राइटर ने दो चीज़ों को कनेक्ट किया है। टेक अ जायंट लेप फॉर अ न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। ठीक है, देख सकते हो कि हमने भी चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लॉन्च किया, उसके साथ आदित्य L1 कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट आउटर स्पेस। ठीक है, बट यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी इन्होंने एनालॉजी दी है और उसको समझाया है अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका पार्ट ऑफ कोर्स द अर्थ, एक अपने आप में कॉन्टिनेंट भी है, साउथ में साउथ पोल, the southernmost point of the earth of course you can say, so somewhat अंटार्कटिका। एनालॉजी ये है कि इन्होंने बताया है कि कैसे नॉर्वे के एंड ब्रिटिश के एक वन ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड द नॉर्वेजियन दो लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग में एक्सपीडिशन स्टार्ट की वहाँ पे अंटार्कटिका पे। ओवर द टाइम क्या हुआ कि दो कंट्रीज जो दो सिटीजन थे ब्रिटेन एंड नॉर्वे के, उसके बाद 5 और कंट्रीज ने ज्वाइन किया एक्सपेडिशन और एक्सप्लोरेशन ऑफ द अंटार्कटिका। ठीक है, और द सदर्न मोस्ट पार्ट सदर्न पोल। तो उसके बाद लेटर ऑन और भी 5 से 7 हुई, 7 से 12 कंट्रीज होंगी। आज के डेट में अराउंड 29 कंट्रीज जो वो उनका जो मिशन है, जो रिसर्च स्टेशन है वो बेस्ड है अंटार्कटिका में। ठीक है, बट जो अंटार्कटिका है इसको नॉन मिलिटराइज्ड टेरिटरी डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, in order to preserve the sanctity you can say or the the beauty or all of this keep this natural this beauty or natural all peace and tranquility in this particular the region of earth, the south pole or the Antarctica। ठीक है, because everywhere you see that competition is going on between the countries, be it for example Arctic Ocean, आर्कटिक में भी आर्कटिक सर्कल है, उसके भी मेंबर्स कंट्रीज हैं। So of course everywhere because these are the regions which are not that explored ones and of course there are lots of opportunity you can say related to the natural resources। ठीक है, सो जहाँ पे भी कुछ ऐसा फ्री का मिल जाए तो every country competes। ठीक है, बट ऑफ कोर्स कुछ की टेरिटरी आती है, कुछ की नहीं लगती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ टेक्निकल ग्राउंड टू सी। बट समवॉट कि कैसे कंट्री सब ने मिल के, जैसे इंडिया की भी जो बेस है, जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में 3 है। फर्स्ट इज दक्षिण गंगोत्री 1973 में लॉन्च इस को वहाँ पे इंडिया ने ओपन किया था। उसके बाद हमारे पास मैत्री है एंड देन भारती। तो मैत्री एंड भारती आर द 2 रिसर्च स्टेशंस व्हिच आर करंटली ऑपरेशनल इन अंटार्कटिका, ऐसे ही बाकी कंट्रीज की। ठीक है, एंड मैत्री जो है वो नॉर्वेजियन के एक माउंट लैंड है, क्वीन माउंट लैंड बोलते हैं इसको, उसी वहीं पे बेस्ड है। ठीक है, so these are the 2 मैत्री एंड भारती which are currently operational, 2 research operational in Antarctica।
ठीक है। तो इस तरह से तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट करके यहाँ पे पीस बनाए रखा है अंटार्कटिका में, ठीक है, उसी तरीके से हमें एक एथिक्स की, देख सकते हो यहाँ पे न्यू एथिक्स की जरूरत है, कहाँ पे, आउटर स्पेस में, जहाँ पे कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। हर कंट्री चाहती, सब देश यही चाहते हैं कि हम मून पे चले जाएं, सन पे चले जाएं, ठीक है। तो आउटर स्पेस में कि वहां पे एक शांति बनी रहे, वहां पे भी एक कहीं ना कहीं एथिक्स फॉलो करने की जरूरत है हमें, सो दैट कि वहां की जैसे हम अंटार्कटिका में एक रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, सब कंट्री अपने अपने लेवल पे एक रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एथिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके से हमें आउटर स्पेस की जरूरत है। फाइन, सो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड यहाँ पे फिर इन दिस एंटायर आर्टिकल। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में राइटर ने चंद्रयान 3 मिशन की भी बात करी है, एंड ये भी कहा है कि हाउ इंडिया कैन लीड द नेशंस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू, यस, इंडिया मस्ट सेट द पेस फॉर वर्ल्ड्स एजेंडा ऑन द मून। फाइन, तो ये कहा है इन्होंने। तो आई होप कि यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे नेम्स हैं वही बताए रखे हैं, ब्रिटिश सिटीजन एंड अदर वाज फर्स्ट नॉर्वेजियन। सो यहाँ पे इन लोगों के बारे में बात की है। उसके बाद ये 2 लोग, उसके बाद ऊपर लेटर ऑन हमने जाके देखा कि ये 2 से 7 कंट्रीज हो गई जो कि इंटरेस्ट शो करती रही इसमें। तो यू कैन से Britain had been Britain had been outdone by Norway on the South Pole, but she was not going to be out of the race for territorial claims over Antarctica. So Britain and Norway do yahan se, nor others. And now apart from Norway, the first South Pole arrivee and claimant was Norway. Britain, the second South Pole arrivee and claimant. There are 5 others who have sharply defined areas on the Antarctic and which they regard as theirs. So दो तो ये हो गए, Britain and Norway. And next is, so Norway was the first one which arrived on the South Pole, or as an arrivee on the South Pole or the Antarctica, you can say. And of course, the next one, the second one was the Britain. And after that, we have Australia, Argentina, Chile, France, and New Zealand. So total in numbers 7. ठीक है. So Antarctica has 7 flags flying on their own. ठीक है. इनिशियली, बट लेटर ऑन अगर देखोगे तो ये 7 से 12 हुई, 12 से आज प्रेजेंट जो है somewhat 29 countries around there, 54 parties to the treaty है, जिसमें 29 having consultation status. Okay, not 29 have just consultation status, but in total there are 54 parties, ठीक है, to this treaty on this Antarctica. तो क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि बट देन व्हाई वर द 7 ऑन दैट इनहॉस्पिटेबल कॉन्टिनेंट एट ऑल, क्योंकि अंटार्कटिका जो है दैट इज अ इनहॉस्पिटेबल कॉन्टिनेंट। फाइन, यहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं और यहाँ इन्विटेशन नहीं है। तो रेगुलेशन इन अंटार्कटिका वेल बीइंग, तो हुआ क्या कि 1958 में इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर जो है 1958 में देखने को मिला, seeing many players becoming active in Antarctica and figures of Cold War rivalry in unexpected turns. ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स भी काफी एक्टिव हो गया उसके बाद, एंड यूएसएसआर एंड चाइल्ड तो थे ही थे वहां पे। सो यूएसएसआर एंड चाइल्ड सपोर्टेड द अर्जेंटीना प्रपोजल। अर्जेंटीना ने क्या कहा उस टाइम पे कि अर्जेंटीना प्रपोज दैट एटॉमिक एक्सप्लोजन्स बी बैंड इन टोटो on Antarctica. The US objected, but the USSR and Chile supported the Argentina proposal, leading to the US to agree and take the negotiations forward. कि हाँ, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो टेस्टिंग एंड ऑल है वो अंटार्कटिका पे बैंड रहेगी, ठीक है। This was something done for, you can say, for preserving this Antarctica and of course the south pole of the earth. But even before the world developed its sky high eyes, the early Antarcticians had to share their space with others, if only to justify their own. Argentina, Australia, Belgium, Chile, France, Japan, New Zealand, Norway, South Africa, Soviet Union, United Kingdom, and United States. The 12 countries had established over 55 Antarctic research stations. The IGI, that is International Geophysical Year. So they had to make the treaty accord full acceptance to 2 basic things: freedom of scientific research in Antarctica and the peaceful use of the continent. Fine. तो ये 2 चीज जो है यहाँ से हम कैरी फॉरवर्ड करके आउटर स्पेस के लिए भी यूज कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए आउटर स्पेस में, प्लस और स्पेस में पीसफुल यूज ऑफ द स्पेस हो।
An indirect consensus emerged for demilitarization as the treaty prohibited nuclear testing, military operations, economic exploitation, and further territorial claims in Antarctica. So all of these are the things which can be, uh, carried over from here कि आउटर स्पेस जो है उसको भी डीमिलिटराइज किया जाए, ना कि मिलिटराइज हो जाए इन फ्यूचर जाके, जैसे जिस तरह से कंपटीशन देश बढ़ रहा है आज के डेट में, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्दर टेरिटोरियल क्लेम्स इन अंटार्कटिका, ठीक है, कि इन चीजों पे रोक लगाई जाए. टुडे देयर आर 54 पार्टीज टू द ट्रीटी, दैट इज ट्रीटी ऑन अंटार्कटिका, with 29 having consultative status. India with its own station on Queen Maud's Land. तो क्वीन मॉड्स लैंड ये नॉर्वेजियन ट्रीटी में, नॉर्वे के उसमें पड़ता है जुरिसडिक्शन में. एंड यहाँ पे हमारी जो स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन, वी कॉल इट मैत्री. ओके, मैत्री ये बताया पहले. दक्षिण गंगोत्री वो अभी डिसफंक्शनल है, एंड मैत्री एंड अनदर स्टेशन दैट ऑपरेटिंग इन अंटार्कटिका दैट इज कॉल्ड व्हाट, भारती. ठीक है, बट मॉड्स लैंड पे है तो याद रखना मॉड्स लैंड पे कौन सी है, एम फॉर एम, दैट इज मैत्री. फाइन. So India is of course one of the those 29 countries having consultative status. So all of these, but he is finally saying that this article is not about the South Pole or the Antarctica alone. The Earth's seas and ice are different from the sky and its spheres, but we know that there has long been an Antarctic type race in outer space. So this is how he has linked the Antarctic race or competition over Antarctic with outer space. Okay? Between the powers which are perfected with great toil and at a greater expense to penetrate it and go higher and higher, faster and faster than their competitors or countries. So an agreement that is about restraint. Of course, this is what I said कि जो अंटार्कटिक या साउथ पोल रिलेटेड जो ट्रीटी देखते हैं इन कंट्रीज के बीच में हम, और एग्रीमेंट कहीं ना कहीं ये थे कि हर कंट्री अपने लेवल पे अपने आप को रिस्ट्रेंट करेगी, रिस्ट्रेंट की प्रैक्टिस को फॉलो करेगी, ठीक है, प्रैक्टिस करेगी, सो दैट कि मिलिटराइज जोन ना बन जाए अंटार्कटिक. ठीक है, और इसी रिस्ट्रेंट को शो करने की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू द आउटर स्पेस. ठीक है, सो एन अग्रीमेंट दैट इज अबाउट रिस्ट्रेंट इवन एज द अर्थ साउथ पोल ड्रू Amundsen and Scott to it. These were the two people from Britain and Norway who initially made expedition or exploration to the South Pole or the Antarctica. The moon pulled Russia Luna 25 lander and India Chandrayaan 3 to it. The Indian vehicle reached its destination, but the Russian was not so fortunate. Of course, Russian Luna 25 जो मिशन था वो क्रैश हो गया था, फेल्ड हो गई थी, फेल्ड हो गया था ये मिशन before the Chandrayaan 3, just 2 days before. And just as the world's engagement with Antarctica led to a treaty, so does the Moon Agreement adopted by the General Assembly of United Nations in 1979 in a resolution 34/68. Fine. Provided that the space proving humanity's dealings, outer space treaty के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, the treaty of 1979, with the moon should be used exclusively for peaceful purposes, that its environment should not be disrupted, and that the United Nations should be informed of the location and purpose of any station established on. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन को बताना होगा कि पर्पस क्या है आपके आउटर स्पेस मून पे जाने का, एंड किस लोकेशन पे आप लैंड करने वाले हो, तो सारा कुछ बताना होगा, सो दैट कि जो भी फाइंडिंग्स है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज की जा सके. ठीक है, the agreement states that the moon and its natural resources are the common heritage of mankind, and that an international regime should be established to govern the exploitation of such resources when such exploitation is about to become feasible. बात है कि मून जो है वो सारी ह्यूमन काइंड की रिसोर्स है, किसी एक कंट्री की अपनी जागीर नहीं है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. सो देयरफॉर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है जो जिस पे जो भी गवर्नेंस रिलेटेड है, स्पेस रिलेटेड गवर्नेंस है, उसको देखे. The Moon Agreement is far-sighted. Something of the world's experience of Antarctica and the working of the Antarctic Treaty forms it. The Moon Agreement is a self-regulating covenant of restraint. So again, this is restraint. Anticipates human appetites for turf, for control, for the urge to get there first, flag and all and dig in. ठीक है, of course हर सारी कंट्रीज यही चाहती हैं कि हम पहले पहुंचे. But pride and exhilaration over the Chandrayaan 3 achievement, entirely natural, must now be
followed by a mature policy on the future of India's earthborne plans on the moon. ठीक है, अनडाउटेडली जो चंद्रयान 3 मिशन है सक्सेस का, हमारे लिए काफी प्राइड एंड नो एक मेजर अचीवमेंट है, बट साथ में ही हमें एक मेच्योर पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत है ऑन द फ्यूचर of such on the future exploration, especially India's earthborne plans on the moon or future exploration of the moon. To put it differently, as an earth pioneer on the moon, India must by precept and practice set the pace for the earth's agenda on the moon and of the moon's future as a partner with the earth, as a partner and not as a property, as a collaborator in science, not a colony in subjugation. The moon agreement must be taken to its next logical stage, and Prime Minister Narendra Modi's statement, the success of Chandrayaan 3 is not just India's alone, but it belongs to all of humanity, was wise and responsible statement. ठीक है, ये कहा था प्रधानमंत्री ने. Following up on that, he can now do the world's space missions great service. He can do so now by taking the initiative to craft a declaration of the fundamental rights of the outer space and thereby inaugurate a new ethics for human activity in outer space, including very pointedly the Earth's responsibilities towards outer space debris. ठीक है कि outer space debris जो rockets फेल हो जाते हैं, जो आफ्टर लाइफ खत्म करने के बाद, ठीक है, जो debris बन जाते हैं, तो जरूरी है कि इस डायरेक्शन में भी स्टेप लिया जाए, and India can lead the other countries in. Fine. Apart from this, the outer space treaty and the moon agreement now need aligning. ठीक है, so दोनों को align करने की जरूरत है. ठीक है कि दोनों को with respect to each other देखा जाए, ना कि in isolation. So the outer space treaty and the moon agreement now need aligning not just with the latest advances in space missions, but with the moral compass to the stars. India cannot afford to be among those who may want to scramble for outer space hegemonies over what is not just the common heritage of humankind, but that of a larger cosmos. ठीक है कि इंडिया ऐसा नहीं बनना चाहेगा, या it cannot afford actually to be among those who may want to scramble, okay, या compete for the outer space hegemonies for what is not just the common heritage, जो कि common heritage है human, ठीक है, is not a property of country. So therefore India can lead the world. This article is about Vietnam, key piece of America's Indo-Pacific puzzle. क्योंकि जो G20 समिट में जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आए थे बिडेन साहब, तो यहाँ से वो अगर आप देखोगे तो 10th को ही वियतनाम चले गए थे. सो जाने के बाद क्या हुआ कि वियतनाम, इस बार क्या हुआ कि इन लोगों ने, वियतनाम एंड यूएस ने अपने जो रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस, उसको अपग्रेड किया है. एंड अर्लियर ये जो रिलेशन थी वो होती हुई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, एंड अब अपग्रेड करके इसको कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रॉम यूएस वियतनाम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप दैट वाज फोर्ज्ड इन 2013. ओके, सो इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ खास यहाँ पे नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर वियतनाम यूएस के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो इंडियन ओशन में पर्टिकुलरली, या इवन साउथ चाइना सी साइड, हमें कहीं ना कहीं इंडिया, जो कि ऑलरेडी यूएस के साथ एक अच्छा रिलेशन रखता है आज के टाइम में, हम शेयर करते हैं, तो वियतनाम के साथ में मिल करके हम काम कर सकते हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, इन द इंडो पैसिफिक यू कैन से. ठीक है, सो बस इतनी रेलिवेंस है इसकी, और कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें. ठीक है, जो एक और चीज़ है, जैसे इसका ध्यान रखना कि मई 2022 में द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी वाज लॉन्च्ड बाय द यूएस विद वियतनाम एज अ फाउंडिंग मेंबर along with 13 other countries to revive Washington economic dynamism in the Asia Pacific. यह भी ना कहीं इसमें इंटरेस्ट शो कर चुका है. ठीक है, ठीक है. So this is one thing. The another thing is India and US के बीच में एक और ICET, that is India's initiative on critical and emerging technology partnership with the US along with the Quad's principle of critical and emerging technology could provide an overarching framework in the Indo-Pacific for standardization of technology in its design, development and use. So ICET जो कि इंडिया एंड of course US के बीच में है, this agreement initiative, that is initiative on critical and emerging technology. So इसमें भी कहीं ना कहीं वियतनाम supply chain arc which extends from Vietnam to Europe via West Asia and anchored by India with the newly launched India Middle East Europe Economic Corridor. That was of course announced during the recent G20 summit, could symbolize comprehensive strategic partnership apt way. ठीक है, इस तरह से जो comprehensive strategic partnership दो कंट्रीज ने की है, यूएस वियतनाम ने, अपग्रेडेड फ्रॉम द
comprehensive partnership. So these are the things which actually shows that somewhat or symbolizes that is comprehensive partnership in apt way. Okay, so this is what I mean important as far as this article is, not much. After that we have this article 3 years of Abraham Accords. So again, this whole article is not that important, but what is important is, of course, over the time we are improving relation ties with the Middle East or West Asian nations, the nations mentioned here. Plus we are we have a good some bond with Israel as well. ठीक है, काफी टाइम से, of course. So 3 years of the Abraham Accords, and 3 years since the signing of the Abraham Accords क्या है, तो this is between Israel and it's a Jewish country, you know, and the United Arab Emirates and the Bahrain, mostly Islamic nations, under the auspices of the US government. ये ट्रम्प के टाइम पे हुआ था, एंड उसके बाद 3 months later दिसंबर 2020 में मोरक्को ने इसको ज्वाइन कर लिया था इस अब्राहम अकॉर्ड को. ठीक है, मीन्स leading to normalization of the relation between a Jewish country called Israel and the Arab nations. Okay, या मुस्लिम इस्लामिक नेशंस, जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी टाइम से रिलेशन नहीं चल रहे थे, बट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मीडिएट किया था. ठीक है, तो कह सकते हो कि कुछ अच्छे काम भी किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड वन ऑफ दिस आई मीन दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ अब्राहम अकॉर्ड. ठीक है, सो बस इतना पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज हैं, किसके बीच में ये अकॉर्ड है. ठीक है, तो द एग्रीमेंट बिटवीन इजराइल, बहरीन भी पार्ट है ऑफ कोर्स, यूएई एंड मोरक्को ने लेटर ज्वाइन किया, हैज इम्प्रूव नॉट जस्ट रीजनल टाइज बट हैज ऑल्सो brought better opportunities for Indians, because we are, you know, we share today the good relations with all of these countries. ठीक है, Bahrain, Israel, UAE and all. So of course that's why he is saying that the writer is of course the Israel ambassador. Okay, this is of course somewhat giving opportunity to India as well, because not to forget that we are also the part of I2U2, that is Israel, India and UAE and US, that is like Quad in West Asia. So I2U2 formed by Israel, India, UAE and the US. I2, India, Israel and U2, that is U. Okay, so the Abraham Accords made the I2U2 group possible, and its primary focus will be on joint investment in critical areas such as water, energy. So of course क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड जब हुआ तो उसके वजह से नॉर्मैलिटी जो है रिलेशन में देखने को मिली बिटवीन that is Israel and the UAE, and इसकी वजह से अब्राहम अकॉर्ड्स मेड द I2U2 ग्रुप पॉसिबल, क्योंकि जब इसराइल एंड यूएई के बीच में रिलेशंस इंप्रूव हुए तो ऑफ कोर्स both of them were ready to sign such kind of groupings or come up with such kind of group. Okay, so this is what being written by the ambassador of Israel to India, and of course further India holds a significant position among our partners, and the scope of our collaboration underscores our shared interests, including championing sustainable recovery from the COVID-19 pandemic, expanding trade, addressing climate change, and countering threats to international security. तो इजराइल एक छोटा सा देश है बट सिक्योरिटी काफ़ी एडवांस है, इंडिया को काफ़ी हेल्प भी करी थी इवन ड्यूरिंग कारगिल वॉर्स किए थे, प्लस टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो है ही है, साथ में स्पेशली इवन इन द वाटर मैनेजमेंट. ठीक है, especially for the agriculture and all, drip irrigation plus तो वाटर मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस जो है ज़बरदस्त है, एग्रीकल्चर की ज़बरदस्त है. तो ऑल ऑफ दिस ओवर द टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल गए थे, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ओवर द टाइम इम्प्रूव हुई है. Through the concerted efforts of our country's public and private sectors, we are poised to deliver promising outcomes for the entire world. Our nations share a special bond with India and its people, and we remain committed to realizing the full potential of the accord as partners in peace and prosperity. एक बात है, इंडिया भी इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है, इस अकॉर्ड को, इससे पॉजिटिव है. ओके, व्हाट एल्स इंपॉर्टेंट. सो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे पाकिस्तान की हायर जुडिशरी से रिलेटेड है रिव्यू, हमें कुछ लेना देना नहीं इससे एज सच. ठीक है, कैन सेफली स्किप दिस आर्टिकल. नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख सकते हैं क्विकली. So White House backs probe into serious allegations, John Kirby. So of course कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वैसे एलिगेशन लगाई है इंडिया पे कि नीजर को नीजर को इंडिया में नहीं कनाडा में ही मारा गया है. सो कि इंडियन की जो एजेंसी है इंडिया ने को किया है मारा है नीजर को. सो डिफरेंट कंट्रीज बीट ब्रिटेन बीट यूएस सब ने यही कहा कि पहले जांच कर लेनी चाहिए फिर कुछ बोलना चाहिए अगर क्रूड आपके पास प्रूफ है तो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बोलना इससे शोभा नहीं देता. कहीं ना कहीं अगर कोई मिनिस्टर का अलग बात होती है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर ऐसी बात कर रहा है, ऑफकोर्स
दिस इज व्हाट वी सी फ्रॉम द लास्ट 4-5 days, नाउ कहीं ना कहीं जो बायलैटरल रिलेशंस है इंडिया कनाडा की वो डेटीरियोरेट होती है। ठीक है, 3-4 दिन अब यहाँ के भी आवा वगत भी नहीं क्यों नाराज। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अर्जिस इंडियन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो देख सकते हो इंडिया की कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट की है यूएस के डिपार्टमेंट ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, serious allegations says Australia on Trudeau's remarks on killing of Niger. Okay, so Foreign Ministry of Australia ने भी यही कहा है कि these are serious allegations and they are deeply concerning for all of us. I would note investigations has way. एक बात है कि पहले जांच कर लो बात बोलो। US considering Prime Minister Modi invite to Biden to be chief guest at Republic Day. ये इंडिया कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर जो रिपब्लिक डे हम मनाने वाले हैं उस पर कहीं ना कहीं जो क्वाड के हेड लीडर्स हैं, जापान, यूएस एंड कोर्स ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर्स, तो उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाए। ठीक है, देखते हैं आता है। तो क्योंकि नेक्स्ट ईयर जनवरी में ही होपफुली इलेक्शंस यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, एंड तुर्की रेजेस कंसर्न ओवर कश्मीर इशू ड्यूरिंग यूएनजीए। ठीक है, तो यहाँ पे आके इंडिया में कुछ और बात करते हैं, वहाँ से जाने के बाद कुछ और बात करते हैं। तुर्की, ठीक है, concerns over Kashmir issue during UNGA. Turkish President Recep Tayyip Erdogan raised the issue of Kashmir during his address to the world leaders at the high level session. ठीक है, देख सकते हो कि इंडिया में आए थे तो इन्होंने कहा था कि his comments come after a week after he met Prime Minister Modi on the sidelines of G20 summit during which leaders discussed the bilateral ties. तो ये नहीं की बातें करने से नहीं मानने आई मीन नहीं कहीं ना कहीं ये बातों को, क्योंकि इनके जो रिलेशंस है वो ये है कि खुश रखना है पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान से भी अच्छे रहे हैं तुर्की के और अभी भी हैं, तो इसलिए ऐसी चीज़ें स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। बट एनी हाउ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ आगे कुछ और कहती हैं और कहती, ठीक है, इनकी अपनी डिप्लोमेसी है। ठीक है, फर्दर डिलिमिटेशन डिबेट जेंडर वर्सेस रीजनल कास्ट आइडेंटिटीज। तो ऑफ कोर्स डिलिमिटेशन कमीशन एंड डिलिमिटेशन की जरूरत है, क्योंकि ओबीसी हो या जो भी जिसको भी रिजर्वेशन देना 33% अक्रॉस द दिस ग्रुपिंग्स और द कास्ट एंड ऑल और रीजन, तो ऑफ कोर्स हमारे को डिलिमिटेशन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि सेंसस एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी विच इज टू फॉलो द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, बट reservation of 1/3 of the seat parliament and added another power shift. Of course कि somewhat जो फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026 उसमें क्योंकि 26 तक मैंने कहा कि जो सीट्स उसको फ्रीज कर दी गई थी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ कोर्स दिस, ठीक है, नॉट 11 बट 21 सेल, तो कहीं ना कहीं दोबारा से रिव्यू करेंगे फिर देखेंगे। तब हो सकता है कि ओबीसी में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाए, तो ऑफ कोर्स उस केस में हमें सीट्स और ज़्यादा देनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच टू एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंडिंग कोटा। ठीक है, तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019 हैड एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा टिल 20। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको बोलते हैं, तो ये एक बेंच जो है वो एग्जामिन करेगी वैलिडिटी ऑफ दिस एक्सटेंडिंग। सो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, 105th या 106 जो है वो, ये आपको ध्यान रखना है कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। सो ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा टिल 2030। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड न्यूज़। तो दोनों ये काराबाग ऑपरेशन हॉल्टेड, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये काफ़ी सालों से इशू चल रहा है रिलेटेड टू द काराबाग रीजन। ठीक है, नागोर्नो काराबाग इसको पूरा बोलते हैं, द माउंटेनियस रीजन, देख सकते हो नागोर्नो काराबाग, a mountainous region that is part of Azerbaijan and came under the control of ethnic Armenian forces during a separatist war in 1990s। पार्ट ये जो है नागोर्नो काराबाग ये किसका है, रीजन किसका है, अजरबैजान का,
बट अर्मेनियन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया था इन द ईयर 1990s इन द सेपरेटिस्ट वॉर, ठीक है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में. What else important? So here we have ADB, Asian Development Bank, lowers India GDP growth outlook for this fiscal to 6.3%, and RO unlikely to deter Canadian investment in India. Okay. ये देख सकते हो कि tempering expectations, ADB pares its fiscal year GDP growth view on concerns that the erratic rains in this year's monsoon could hit farm output. Erratic rainfall has resulted in damage to rice crop, lower kharif sowing for pulses. Bank lender slashes its farm sector growth outlook for the year by almost 1% points and says uptick in capacity utilization in several industries reflects better policy environment. तो एक बैलेंस करने की कोशिश की है, कुछ फार्म सेक्टर लेकर खास करके जो है वो एंटीसिपेट हो, फार्म के लेवल पे हमें 1% पॉइंट से ग्रोथ जो है डाउन कर दिया है. क्यों? क्योंकि एरेटिक रेनफॉल की वजह से, मानसून की वजह से हमारे को प्लस कुछ फसलों को नुकसान भी हुआ है, तो उसकी ओवर ग्रोथ इन फार्म सेक्टर. फाइनली वी आर ऑन द स्पोर्ट्स पेज. सो दैट्स इट as far as today's concerned. Before we stop here, let us quickly have a look at this. There's questions based on our analysis. So the first question is, India cannot afford to be among those who want to scramble for outer space hegemonies over what is not just a common heritage of kind, but that of a larger cosmos. You need to comment. And the second is, consider the following statements. Delimitation means the act or process of fixing limits or boundaries of territorial constitution in a country or province having a legislative body. So delimitation का first जो हम delimitation की बात कर रहे हैं post 26, question is related to that context. Second is, delimitation commission is appointed for the purpose of delimitation by the Prime Minister of India. You need to choose the incorrect option of this 4. Fine. So that's it from my side. If you have any query, anything, you can put the same in the section. Until then, take care, keep revising, and do not forget to solve these questions. Alongside that, stay tuned for the tomorrow's Hindu analysis. Thank you.